आज की सुबह कुछ अलग थी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों में वो औपचारिकता होती है, वो माय लॉर्ड वाली रफ्तार होती है। लेकिन आज कोर्ट रूम में हवा थोड़ी बदली थी, क्योंकि भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा वाक्य बोल दिया जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। मैसेज देने को यही सबसे अच्छी सुबह है। सुनते ही माहौल में खामोशी और राजनीतिक गलियारों में हलचल दोनों साथ फैल गए। जैसे कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी को नहीं, बल्कि पूरी सरकार को आईना दिखा दिया हो। मामला था एक आरोपी का जो दिल्ली धमाके से जुड़े यूएपीए केस में जमानत की मांग कर रहा था। वकील ने दलील दी कि सर, कल धमाका हुआ है, आज सुनवाई ठीक नहीं रहेगी। लेकिन कोर्ट ने वहीं पर तीखा जवाब दे दिया, नहीं, यही सुबह ठीक है मैसेज देने के लिए। यानी साफ है, जस्टिस सूर्यकांत ने यह बता दिया कि अदालतें अब वक्त देखकर फैसला नहीं करेंगी, बल्कि वक्त को दिशा दिखाने का काम करेंगी। ये था सुप्रीम कोर्ट का सटल लेकिन डायरेक्ट मैसेज मोदी सरकार को। हम देख रहे हैं, सोचिए, जिस दौर में सरकारें यूएपीए को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती रही हैं, उसी कानून पर आज अदालत ने कहा कि न्याय का वक्त सरकार तय नहीं करेगी। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये, जैसे किसी ने सत्ता के कान में फुसफुसाकर कहा हो, अब ये आपकी सुबह नहीं, हमारी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है तो वो सिर्फ आरोप नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और ऐसे मामलों में नरमी नहीं चलेगी। अब मजेदार बात यह है कि जब ये फैसला आया तो सरकार समर्थक कह रहे थे कि कोर्ट ने बिल्कुल सख्ती दिखाई, देश के खिलाफ कोई रहम नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता की बेचैनी कुछ और थी, क्योंकि वही अदालत जिसने आज एक आरोपी की जमानत खारिज की, वही कल किसी मंत्री के केस में भी यही सुबह सबसे अच्छी कह सकती है, और तब खेल पलट जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत का ये लहजा कोई अचानक पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने पहले भी कई बार सरकार की कार्यशैली पर अप्रत्यक्ष सवाल उठाए हैं, चाहे वो नियुक्तियों का मामला हो, जांच एजेंसियों की भूमिका हो या संविधान की आत्मा की बात। और अब जबकि वो अगले सीजेआई बनने वाले हैं, तो ये साफ संकेत है कि आने वाला दौर सत्ता के लिए आसान नहीं रहने वाला। कोर्ट अब केवल न्याय की कुर्सी पर नहीं बल्कि नैतिकता की चौकी पर बैठा दिखेगा। यूएपीए जैसा कानून, जिसे अक्सर सरकारें अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, उसी कानून पर अदालत ने कहा कि हम सिर्फ अभियोजन की कहानी नहीं सुनेंगे, हम संविधान की कहानी सुनेंगे। यानी कोर्ट ने 2 लाइन में यह बता दिया कि अब सरकार की सुविधा नहीं बल्कि संविधान की सच्चाई चलेगी। और यही वजह है कि आज का ये फैसला कल के सियासी भाषणों की धड़कन बन चुका है। दिल्ली धमाके के बाद जब सरकार ने सुरक्षा पर बयान दिए तो लोगों को लगा कि ये रूटीन बयानबाजी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन ये फैसला देकर सरकार को एक क्लास दे दी कि आप भाषण में सख्त हो सकते हैं, लेकिन हम कानून में सख्त हैं। और यही फर्क है सत्ता और न्याय के बीच। सरकार चाहती है कि फैसले उसके अनुकूल हों, लेकिन अदालत अब कह रही है फैसला संविधान के अनुकूल होगा। देखा जाए तो यह फैसला केवल एक आरोपी या एक जमानत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्ता के अहंकार को सीधा संदेश है। कोर्ट ने कहा, अगर आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपसे सबसे पहले नैतिकता की उम्मीद की जाती है। और यही लाइन आने वाले महीनों में कई नेताओं को असहज करेगी, क्योंकि नैतिकता अब सिर्फ भाषणों का हिस्सा नहीं बल्कि कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने यह बयान सिर्फ केस के संदर्भ में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक संकेत दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिस्टम की चुप्पी तोड़ने वाला है। अब जो फैसले आएंगे उनमें अदालतें सरकार की मंशा नहीं, संविधान की आत्मा देखेंगी। और यही वो मैसेज है जो आज की सुबह पूरे देश को मिला। कुल मिलाकर आज की यह सुबह सिर्फ अदालत की नहीं थी, यह लोकतंत्र की सुबह थी। जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो एक लाइन नहीं, एक दिशा है। कानून वक्त देखकर नहीं, वक्त को देखकर बदलता है। और मोदी सरकार के लिए यह एक साइलेंट वार्निंग भी है कि सुप्रीम कोर्ट अब न सिर्फ जागा है बल्कि बोलने को भी तैयार है। और जब अदालत बोलती है तो सत्ता सुनने को मजबूर होती है। My Lord the Chief Justice, Justice Masih and Justice Oak, my Lord. The first thing which comes to our mind when we think about Justice Oak is a tireless
judge, my lord, a workaholic who has never, my lord, been seen ill prepared. And in fact, my lord, the problem was your lordships were more prepared than us, my lords. And this is a genuine right-handed compliment, my lord. Your lordships have always read everything. Lord, the most amazing thing, my lord, which I personally find amazing is that despite, my lord, such an irreparable loss yesterday, your lordships put duty first, duty as a judge first. Otherwise, my lord, your lordships had an option of delivering judgments virtually also. But, my lord, this is what, my lord, which all of us will have to learn to put duty first. Lord, I am not here, my lord, to advise your lordships, my lord, but I'll take the opportunity. Please spare more time for the family. The work schedule you must have followed must be such that your family also may take time to adjust with your continuous presence, because you must always been in your chamber working for the matters. But this is their rightful claim, and don't close any options. Your lordship's services are required, my lords. I wish your lordships a very good health and a very good second career of your lordship's choice. And Third career. third career, my lord. I stand corrected, my lords. I stand corrected. And though your lordships may not believe in God, but I am a believer, my lord, I pray that may God always be by your side. Thank you. Lord, one more thing. Your lordships would also be remembered as a judge who took stand when it was required, my lords. In fact, my lord, me and Raju were almost in every case, my lord, on the wrong side of your lordship's judgment. At the receiving end. At the receiving end. But, my lord, as I have said, that our respect and love for a judge can never depend upon the relief which we got or we did not get. Lord, thank you for being what you are. Thank you. May I, Lord, on behalf of the entire Lord Bar Association, first of all, Lord, offer our very Lord heartfelt condolences for this very tragic thing which has happened, Lord, to your lordships yesterday. It is your lordships, Lord, sense of duty, which is the reason why your lordships are here today. Your lordship's commitment to the cause of justice is exhibited by the fact that you went for the cremation and came back here today to be with us for your delivering your judgments, and also, Lord, to be with us for this, giving us this occasion, Lord, to speak about your lordship's career. Lord, it is a matter which I can say on behalf of all the members of the bar that we never felt that any face matters before your lordships. We never felt, Lord, that if there was a point involved in the matter, you will not get relief. We went back many times even without getting a relief, but we never ever felt that that justice has not been done, Lord. So Lord, I'll reserve the rest for the evening, Lord, but I, Lord, very, Lord, sincerely hope that your lordships have a very, Lord, meaningful third tenure. Of course, your lordship will miss your lordship's mother, because that is something which I thought your lordship would have cherished after retirement. But that is not God's will. Nobody can, Lord, change that. But I'm sure, Lord, your lordship's health, the rest of your life will be very healthy, meaningful, and as, Lord, fruitful as your lordships have been so far to the institution. Chief Justice, this is Masi, this is Hoke. The first name of my lords and the third name of my lords has already been widely known. It's the middle name of Srinivasa. Lordship's name had the Lord itself. You were a born judge, and throughout your life you have dispensed divine justice. Without any favor, without any ill will, true to your oath. And when in this moment of your extreme personal grief, you have come for the call of duty, on behalf of our association and members, we wish you well, always. My Lord, first of all, our deepest condolences. What can I say? When some judge leaves, such a vacuum is created that he can never be replaced. That's what I feel today. You know, the Constitution of India
had a vision of certain socio-economic goals. And we in the country and the institutions of the country had to work together to realize those goals. But ultimately, the thematic thread that runs through our Constitution is liberty. That's the thematic thread, because the history of civilization is a history of strangulating liberty. Empires have been lost because they strangulated liberty. Slavery vanished because it strangulated liberty. Dominance of cultures, dominance of states. If they wished to strangle liberty, people rose. And therefore, a judge will be remembered only, and those are the judges in this court who will be remembered, when the cause of liberty is served through this institution. Which is why we remember Justice Khanna, which is why we remember how ADM Jabalpur was bad, which is why we remember Keshav Nand Bharti, which is why we remember Patanjali Shastri's judgments. Why? Because the thematic thread of liberty was protected by this court. And you symbolize that. You protected liberty like none else did in this court. And I remember the words of Patrick Henry in the Revolution, in the American Revolution, when he said, "Give me liberty or give me death." And John Donne, the famous poet, said, "Give me liberty, for where paradise my prison, I would love to leap the crystal walls." You have leapt that crystal wall that enslaved people in this country, and we salute you for it. Thank you for being what you are and what you were. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।